One. Today I'm going to start with an important topic of natural products. That is for the MSc final year students. The name of the topic is flavonoids. Let's start it. Flavonoids are the first thing is flavors. This is derived from the word flavors which means yellow. So they are always yellow in color. ऐसे कंपाउंड्स जो कि येलो पिगमेंट्स हमें शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, दे आर द टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स. फ्लेवोनॉइड्स कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग फिनोलिक कंपाउंड्स. जो मेन है फ्लेवोनॉइड्स, जब स्टार्ट करते हैं हम केमिकली उसको लिखना, तो उसमें हमेशा एक फिनोल ग्रुप लगा होता है, मतलब बेंजीन रिंग का कंपाउंड है. Next, the other property is these are always yellow in color and it is a type of plant pigment. How it occurs? It can occur in the two states. First state is in the free states. In free state it exists as glycons and in its combined form it exists as glycosides. And now the glycons flavonoids which are springly soluble in water but they are completely dissolved in organic solvents. Why? Because as we know flavonoid is made up of phenolic compounds. So always these are always soluble in the organic solvents like benzene which are non-polar. Now the flavonoid glycosides. From the name it is clear that it must contain a glycosidic linkage that you must be read in your glucose structure. 1,6 carbon connection, glycosidic linkage, carbon and oxygen. And now that we will later on discuss what is that type of linkage. Now next thing is that these glycosides, these are dissolved in water and these are not dissolved in organic solvents. Why? Because glycosidic is a compound which is polar in nature. Now these exhibit biological activity in mammals. In human beings, these flavonoids, means in us, these flavonoids are very important. Why? Because अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ऑलवेज डॉक्टर सजेस्ट कि फ्रूट्स खाओ. तो फ्लेवोनॉइड्स क्या हैं? फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट थिंग इज सोर्सेज ऑफ फ्लेवोनॉइड्स. सोर्सेज ऑफ फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, टी एंड मैनी मोर items that we consume in our daily life. Now let's discuss some of the chemically its properties. What are the benefits for the flavonoids for us? First thing, delays or prevents the onset of disease caused by free radicals. तो flavonoids का ये यूज़ आ जाता है फर्स्टली कि ये हमें प्रिवेंट करता है डिजीज़ से. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट. एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है. कोई भी टॉक्सिक है अगर बॉडी में तो उसको निकाल देते हैं फ्लेवोनॉइड्स. एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस हैं, एसिडिटी रिड्यूस करता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द एंडोथेलियल फंक्शंस. दिस एंडोथेलियल फंक्शन इज रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड लंग्स. सो इट ऑल्सो कंट्रोल द सेल फंक्शंस. इट ऑल्सो inhibit the LDL oxidation by free radicals. What is this LDL? That is low density lipoprotein. So it inhibits its oxidation. Why it inhibits? Why the need of this to inhibit? Because it produces cholesterol which is not good for health. Next बात आती है कि it inhibits the platelet aggregation. What is this platelet aggregation? You know platelets are the types of cells. So their aggregation combination, it inhibits that. It is an antibacterial. These reduce the risk of cardiovascular disease, that is the disease related to heart, that is reduced by flavonoids. Blood pressure reduction, that is also due to its vasodilatory action, it also reduces that. Now ये तो बात थी हमारी जो भी यू कैन से कि हम कॉमनली फ्लेवोनॉइड्स को कैसे जानते हैं, उसमें हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं. हम तो इसको केमिकली पढ़ना चाहते हैं इन अ नेचुरल कंपाउंड्स. हमें इसको केमिस्ट्री इसकी समझनी है, तो उसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी प्रेपरेशन कैसे है, इसकी बायोसिंथेसिस कैसे है, वो सारा हमने इसमें डिस्कस करना है.
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं हम बेंजो गामा पायरोन। एंड बेंजो गामा पायरोन का मतलब क्या है? क्रोमोन भी इसको बोलते हैं। एक तरह की पिगमेंट है तो क्रोमो वर्ड आ गया, क्रोमोन। अब कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ओन उसी के लिए आ रहा है। वन इज बेंजीन रिंग दैट इज कनेक्टेड विथ द अदर रिंग एंड दैट रिंग इज this, in which we have the ketone group at the 4th position and the oxygen present over 1 position. Let's firstly classify the flavonoids. We have the various type of flavonoids in our chemistry. First is flavone, which is a 2-phenylchromone. As you have seen here, it is 2-phenylchromone. The first ring is this, and that is 2, second ring. So it's 2-phenylchromone. Then is flavanone, that is 2,3-dihydroflavone. Then is flavanone, then dihydroflavone, isoflavone, isoflavanone, anthocyanin, leoanthocyanin, and chalcones, which are the open chain flavonoids. These all we will discuss one by one. And what is its use? Firstly, you have to know about the structure. That is, what is flavone? 2-phenylchromone. 2-phenylchromone means here we have the phenyl group. This complete structure represents a single flavone. But if it is joined with some phenyl group, that is, it's at 2 position, it is connected with some other ring, which is a phenyl ring. So this complete structure is flavone, which I have already shown you. Now it is attached from the second position. I have already marked the numbers. It's 1 and it's 2. From the 2 position, it is connected with the phenyl ring. How we can write the numbers? 1, 2, 3, 4, 5 is this. 6, 7, 8. Like this way you have to write. This is 8, this complete structure, and at the 2 position we have this phenylic group. And this phenylic group you can show 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, and 6 dash. Other structure like 2,3-dihydroflavone, in which we have this is a flavone that is connected with this dihydroflavone. This is dihydroflavone. Why? Because here the double bond is not present. And in the next structure you have flavanol, that is the alcohol group is present at the position number 3. Like it's 1, 2, 3. 3 position containing OH group. 3-hydroxyflavone इसका name है. After that we have dihydroflavone. Dihydro means the double bond is not there. डबल बॉन्ड हटा दिया, OH ग्रुप लगा दिया. डाईहाइड्रोफ्लेवेनॉल, अल्कोहल तो लगा है, ओल ग्रुप है, लेकिन एक डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया. बात करते हैं आइसोफ्लेवोन की. आइसोफ्लेवोन का मतलब है कि जो हमारा फ्लेवोन है उसमें आइसो पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा है. दैट इज फर्स्ट इज ऑक्सीजन 1, 2, third position having the phenyl ring. So it's 3-phenylchromone or isoflavone. After that we have isoflavanone. Isoflavanone means we have the iso word. So we have at the 3 position, that is 1, 2, 3. Third position having phenyl group. So it's isoflavanone means ketone, that is the double bond O. Now the next is, I think there is something missing. Okay, the next is anthocyanin. Anthocyanin is anionic compound और ionic compound है. पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव है, बाकी स्ट्रक्चर में 2 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है. लियोसाइनिन की ये स्ट्रक्चर आ जाती है और चालकोन को आपको लर्न करना है कि ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनानी है. दिस इज चालकोन. नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट विद द आइसोलेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स. For isolation of flavonoids, first we need is the part of plant which is
we have to dry it in a shade, and then we have to pulverize that pulverized material extracted with the different solvents. पूरी तरह से प्लांट को ड्राई कर दिया, उसको पूरी तरह से एक तरह ग्राइंड कर दिया, फिर उस मटेरियल में से डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ एक्सट्रैक्शन करी, जो तो लेस पोलर सॉल्वेंट हैं उनके साथ कर ली। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोन्स, अगर लेस पोलर है ऑब्वियस सी बात है ग्लाइकोन्स थे जो कम पोलर थे, तो ग्लाइकोसिडिक वो थे जो पोलर थे, तो उन पोलर सॉल्वेंट के साथ हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। एग्जाम्पल में बात करते हैं तो फ्लेवोन और आइसोफ्लेवोन टाइप हैं लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पोलर में आते हैं हाइड्रोक्सीलेटर फ्लेवोन एंड फ्लेविनॉल, that is alcohol, which is you know that it is dissolved in polar solvents. And then these flavonoid glycosides and leucyanidins जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, these are extracted by boiling water only. Anthocyanin and anthocyanidins, these are extracted by acidic water and acidic methanol, that is it needs an acidic medium. It is bearing a charge of positive on oxygen and negative Cl negative, so that's why it needs some acidic water. Solid material glycon is extracted by the mixture number of flavonoids. We have solid material thus extracted is mixture of number of flavonoids. बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स इससे हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि मिक्सचर आ रहा है बाहर, और जब मिक्सचर बन रहा है ग्लाइकोन्स का तो मिक्सचर को तो सेपरेट करने के हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, चाहे वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ले लो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. These all are the techniques for separation of the different mixtures. And in the next video we will start with the biosynthesis of flavonoids. Firstly, you have to know about the structure of different flavonoids, then we will continue with its biosynthesis. Thank you very much. For more videos please like and share my channel. Okay.